here I go. I'm sharing my screen again, and we can get started. All right. So here we have our notes, and in that notes, I'm gonna write few commands by continuing this particular segment first, and then we'll go towards this. Okay. So this is a command that we have seen. The Azure regions we can list, but that's not it. Okay, that's not it. So the Azure CLI or PowerShell both are similar one. So both has some the work is same, but the commands that I'm going to fire will be different. Okay, let's see like why we need those commands. I told you it is good for automation purpose. Second, it will be there in your exams. Yeah, whenever you are going to appear for Azure certification exams, yeah, those commands will be asked in the questions. Hmm? In the basically it is MCQ type of exam, but multiple choice questions will be there. But these commands will be there. Like what is the command to create this, and that. Okay, so they are very synonymous when it comes to Azure CLI and Azure Portal. Sorry, PowerShell. So they are synonymous, but you need to remember it. You need to memorize it just to clear the exam. Number one priority thing. Secondly, once you become familiar to it, you will eventually become good at that. Okay. So let's talk about CLI first. Hmm? So you can go to the references, Azure CLI references. I'm going to show the commands quickly. Azure CLI commands reference. Azure has provided that reference. I'm just quickly showing you the page. Reference command article list. So this is a list of commands. That's it. Hmm? So list of commands I'm trying to show you. Like see, Azure account, like which account you're using. Like 164 more commands are there. So you can just get this document and go through this. This is Azure CLI reference documentation, and then there are multiple commands that you can. Azure account will help you to create the account. Then you can set an alias name. You can log that account if you want to with the help of command prompt. You don't need to go into the account and do the activity. And then management group subscription details, account tenant, and there are multiple stuff that you can build with this. Okay, multiple commands. Will not go in depth of each and everything. We'll see some important things that we need to know. Okay, so this is now see the syntax. Hmm? The syntax is AZ space the service name. Account is a service. Hmm? Then so this is for this first group is for AZ account, that is first. Then we have AZ ACR. I'm not sure. AZ AD is for Azure directory, and there are few more. AZ billing is only for billing related stuff. Batch is only for bulk operation automation. Similarly, we have something called as for VM. Today we are going to create VM, right? AZ V stands for, okay, alphabetically sort किया इन्होंने. चलो नीचे. हाँ, AZVM खत्म. This is a short command like AZVM, and then you can perform the operation. Now what all operation that we can do, let me just quickly show you. Azure VM, which if you want to deploy application, I can use Azure VM applications availability set, in which availability zone the VM is listed, which type of disk is there in this particular VM can be listed with this, or you can add if you wanted to. Then VM identity, VM which image is there. If you want to modify, you cannot modify image, but you can add the image using this particular attribute, right? So you from UI you are like selecting the drop down and choosing the VM. If you already know the VM, sorry, image name means operating system name, you can directly as VM is equal to hyphen parameter, say you can put it there. If there are some certain problems with the VM, fire the command, it will get repaired. There are many, right? So we what is the user in that particular VM, you can get a list of it. Okay, these are the short commands. So like so these are the commands that you can perform once the VM is created. So let's create the VM and let's talk about this thing in detail. So you understood the syntax. Let me write the syntax so that you guys will get familiar with that. इधर गया क्या होगा, ठीक है. So I'm just writing a syntax in our notes so that you guys can refer to. ठीक है. CLI commands for VM. Commands for VM service. So VM service के लिए I'm writing CLI command. So there are basically, as I mentioned, so whether it is CLI or whether it is Azure PowerShell, we are going to follow this particular
format. New is for creating, get is for getting the list, set is for updating, remove is for removing. Okay, so this is the these are the attributes that I'll be applying. So for VM, now let's talk about a particular service. So as soon as service will change, it will be similar actually. For VM, so now I'm talking about CLI commands. Okay, so this was for, okay, is it for CLI? No, it was new, get and set, remove. These are for PowerShell actually, not CLI. Hmm? Using PowerShell. CLI commands and PowerShell commands having similar but different syntax. So you need to know. I'm just going to show you syntaxes for CLI syntax for VM and then PowerShell syntax for VM. That's it. You need to know both of them so that you guys will be able to identify कि किसको कहाँ पे fire करना है. ठीक है. So AZ space VM छोटा AZ यहाँ. So I'll quickly go back in the notes. देखो छोटा AZ will be always small. So I need to make it small. पापा छोटा हो जाओ. AZ space VM is a parameter, and if I put list, it will show me all the list of VMs. I'm just making it small, hold down, and just do some icons over there. अरे इसको नहीं करना था. Rohit is here, trying to quickly. So AZ VM list, this particular element will help me to list the VM. Then what we can do is like AZ VM. अरे हर बार capital क्यों करते हैं? AZ VM create, and create will not work like just like this. You need to pass some parameters like what type of hard disk you want to choose. So parameters are passed by using hyphen hyphen and like that. So we'll see that sometimes later after once we create the VMs. Okay, I'm just giving you the difference quickly. AZ VM delete. So delete is just give the name of the VM and it will delete the VM actually. You don't need to go and find it out कौन सा VM है क्या करना है. So your task will become simple when you know the commands. That's the beauty of it basically. Okay, so commands, CLI commands for VM services, and similarly if you want to perform some other services, right? I don't know how to create column over here. I'll not do that. So if you have some other service that you want to do, so see the syntax AZ, name of the service, and then what operation you want to perform with the service. The verb, the final verb will be here. Similarly, if you are doing it for what? If you are doing it for, I'm just removing it from here, for command line. ये सब CLI का हुआ. This is what all CLI related to CLI. So if you want to do it for PowerShell, Control P capital. So remove के जगह पे ये आ गया. So if you want to do it for PowerShell, so they have a very different syntax or very similar syntax to what we have seen in earlier days for command line. So syntax is like get. See, so इसको भी मैं same to same करता bullet. Get hyphen A capital, Z small, and VM. So this is a command that I'm going to fire and I'll get list of all the virtual machines exactly similar to this. But this is different. This is for command line CLI. This is for PowerShell. Okay. So that's the only difference. Both work on different ways. So the command specific to PowerShell will start like this. Like verb will be the first, then AZ will be there, and lastly we'll have the service name. I'm going to show you one more example down there. Then if I want to create new hyphen AZ VM. Then if I want to remove anything, delete, remove AZ hyphen VM. Similarly, last thing left, that is like set. If you want to set some parameters, okay, remove के बाद hyphen रह गया. You're supposed to put hyphen. Okay, that is the segregation, and M should be capital. So that is the syntax. Suppose now it's like VM, you guys will be like, it is very simple, like just putting like this. But as soon as services become complicated, they come under the category of other. So at that particular time, you need to put the service name in camel case actually. So I'm just quickly showing you. Give me a second. इसको थोड़ा सा ऊपर करते क्या? ये बहुत
Yesterday it was like that. I just made it and then I'm doing it today. Okay, that is fine. It's all about understanding things. Okay, suppose I want to create, this is for VM. Okay, so suppose I wanted to do the same thing for virtual network. We will be talking about the virtual network sometimes later, as soon as we move forward to the services. Suppose I want to do it for virtual network, uh, PowerShell commands for virtual network. What is virtual network? See that particular service. So there are multiple services I could have choose from. I could have choose the VNet. That is what I'm doing right now. So how I could write the command is almost similar, but a slight difference that over there. So what is the command? Same, right? Get hyphen a small z and then v ka virtual ka v capital, then it will be virtual network ka n capital network. So if there is a big name like VM is a very small name, right? So that is when it is like 2 characters. But if the service name is having some more characters, you can perform it in this particular way. Easy same ही होगा. मैं copy कर रहा हूँ quickly अभी. I don't have that much time. Yes, meanwhile, if you face any queries, any doubts, you can put it into the chat box. I'll revisit at the end of the session. Remove hyphen control V. So something similar to this, we will be able to put it there or use it from there. Same goes for this as well. Yeah, command line. So if you want to, so instead of VM, it will be like now here. See, there is a difference. Here, virtual and network are two different words. So and we have combined it using camel case, like first character capital, rest is small. But in case of command line CLI, it won't be the same. So virtual and network are two different words, and that there is a category actually. So in this particular case for VMs, एक second ना, for virtual network. So here the things will be different. I'm giving you two examples so that you guys will be able to follow it along with me. इसको नहीं करना है. So for virtual network, how I'll be able to do AZ Chota. Then it is a part of network services or subcategory of network. So VNet is something I'll write virtual network, and then I'll list the virtual network list. Okay, I'm just showing you the side by side comparison so that you guys will be able to understand. Network के अंदर है virtual network, so hence it is showcased in this particular way. So this is a case. Yes, all right. So this is how you can create the command. So CLI commands for VM service, CLI commands for CLI commands for virtual network, and then this is where we have started PowerShell command for. So this is how it will return, and then for VM it will be like above commands, virtual machines. So let's get started now. So let's talk about virtual machines now. So this is a very simple thing that we have implemented. So we have seen only the command. So I'll quickly show you how you can use it into the PowerShell. Let's go. And here I go in my console, so that we have learned yesterday. We created this one by creating some Azure service. And now there are two ways, as I mentioned. I can access the same thing from here, that is Cloudwala PowerShell or Cloudwala terminal, and I can access the same thing from my local system. Both should work exactly same. Okay. So now suppose what is the command? Az space VM space list. I'm firing the command. I'm entering over here. So it is showing me empty array. So it is showing me empty array because there is no virtual machine created. So that is for bash, that is CLI. So if I'm going in PowerShell, I'm just quickly confirming.
So if I'm going in PowerShell, in here I'll not be able to fire the command. Actually, it would work in both places, but the when you are in PowerShell, you are supposed to use PowerShell wala command. What is a PowerShell wala command? PowerShell wala command is like get hyphen. देखो ये automatically आ गया है, easy subscription दिखा रहा है हुआ. I don't want to get the easy subscription as well, or let's get it now. I'm just doing easy hyphen tab किया तो नहीं आता क्या? It is suggesting me कि type करो. So if I want to get the subscription, current subscription, what is my subscription? It is like showing the name, free trial is the name, ID यहाँ से शुरू हुआ, this is my ID, tenant ID is this, and state is enabled. Okay, so this is how you can get the subscription, and then similar way I wanted to get a list of VMs. देखो subscription ID वगैरह वगैरह बहुत सारे parameters आप use कर सकते हो. I want to get VM actually, Azure AZ and capital VM. ठीक है, स्टेटस भी यहाँ से पता चलेगा. आई डोंट वांट स्टेटस एज ऑफ नाउ, आई वांट लिस्ट. तो कुछ भी नहीं है मेरे पास तो नहीं आया. So after some time, once we create a VM, I'll get fire this command again, get az VM, and then we'll see the status, and then I'll tell you the difference between both. Like we'll do it by bash as well as we'll do it by अभी मैं cancel कर रहा हूँ, as well as we'll do it with PowerShell. ठीक है. So now since we are in Azure portal and this particular PowerShell is open in my Azure, so I'm able to see it directly. I'm able to get that Azure subscription directly. But what if I'm trying to access it from my local system? Local system, how can I do that? So can you please help me? Like this is a command for get AZ subscription. If I want to do the same with my with CLI, what would be a similar command? So this is from PowerShell AZ subscription. तो CLI को करने के लिए क्या होगा? So I'm going in notes. So PowerShell command for virtual machines. नीचे यहाँ पे मैं subscription का भी लिख देता हूँ. So this is for subscription. This command is for get AZ subscription. बोल्ड को छोटा करके इसको एक टैब दे देगा. ठीक है. So this is for subscriptions. How can I write a similar command over here in CLI? Can you please help me? मेरे को नहीं आता है. Similar command. Now you know the syntax. What is syntax? ये छोटा होना चाहिए. मैं कॉपी करके सॉरी ये छोटा होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. So this get is going to be the list. AZ is going to be the first. AZ space script subscription का is छोटा, and here it will be list. ठीक है. I just modify the same command so that it should support my other thing. ठीक है. So I'm not going back over here, but I could use my command prompt and I can fire this command, but this time it will show me like you don't have active account. So किसका आपको subscription चाहिए? ठीक है. I'm doing AZ subscription list because my command prompt or the Azure CLI that I install in my laptop doesn't know what is my login credentials, right? We have not done that yet. So for that, first you need to log in, and then you need to fire the rest of the commands, because currently it will not understand. I just fired the command, so it is waiting to get the details. I'm not sure how much time it will take, but it is definitely not gonna I'm gonna do it with PowerShell as well. ऐसे नहीं, PowerShell open करेंगे, Windows PowerShell. So this is Windows का PowerShell, but that is fine. So I don't know what is the version. Latest version होना चाहिए तब ये काम करेगा. It will not get the power command because it is trying to understand PowerShell का command ही नहीं दिया. ठीक है. So same to same command which I fired in my PowerShell on cloud. I'm just trying to get the AZ subscription from my command prompt. Sorry, from my local PowerShell. यहाँ पे कॉपी नहीं होता है, नहीं होता है. टाइप करो यार, शिट. टाइम दिया ना, राइट क्लिक भी नहीं होता. ठीक है. I never tried this PowerShell yet. चलो, I'm doing get hyphen AZ subscription. So it will not understand. Is the term get is not recognized the name of the command. Okay, अपन ने CLI install किया ना, so we don't have PowerShell. अगर PowerShell से काम करना है तो then we need to install that PowerShell, or I need to update. This is Windows PowerShell. I need to have PowerShell 7 or so in my laptop installed. Then only I can do that. And even though I install PowerShell, in that PowerShell I need to install Azure module, AZ module.
ठीक है, then only it will work. Like get command it will not understand anyways, but ठीक है, that is fine. So currently I'm just leaving this part. हाँ, तो देखो यहाँ पे आया subscription is misspelled not recognized status. Subscription example AI knowledge base, get list of subscription logged in account, auto generated. So logged in account, so I'm not logged in. तो get the details of subscription. उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हमें, रीड मोर कमेंट्स इधर जाके बोल रहे हैं, ठीक है. इट इज लाइक कि यू कैन सेट द सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस, बट बेसिकली इट इज ट्राइंग टू टेल यू कि अरे बाबा सब्सक्रिप्शन ऐसे नहीं आता है, इजी सब्सक्रिप्शन से भी आ जाता. सब्सक्रिप्शन का स्पेलिंग गलत होएगा नहीं, ठीक है. विल सी टू इट हाउ टू गेट इट फ्रॉम कमांड लाइन. सो इन माय सिस्टम और जो भी आपने किया था डे 1 डे 2 पे, दैट यू इंस्टॉल्ड अजूर CLI, ठीक है. तो आपके लैपटॉप में अजूर CLI है, ठीक है. इंस्टॉल अजूर CLI इन विंडोज. तो CLI मीन्स बैश. तो बैश को जो भी कमांड चलेंगे वो सारे कमांड्स हम लोग अपने लैपटॉप पे चला सकते हैं. क्विकली स्विचिंग टू बैश. सिंटैक्स में फर्क नहीं है, सिर्फ वहाँ पे VM लिस्ट वगैरह वगैरह होता है स्पेस देके, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है. सो दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स गो एंड ट्राई टू लॉग इन इनटू. देखो अभी ये लॉग इन नहीं है, दैट इज व्हेन इट इज सेइंग कि फॉर लॉग्ड इन अकाउंट. आई एम नॉट लॉग्ड इन, सो आई एम ट्राइंग टू लॉग इन विथ इन माय अकाउंट, बट अजूर से कनेक्ट होगा ना, ठीक है. AZ स्पेस लॉग इन, सिंपल कमांड अजूर स्पेस लॉग इन. तो इट विल रीडायरेक्ट मी टू द ब्राउजर, ठीक है. तो मैं लॉग इन करना चाहता हूँ. बेसिकली आई एम गोना गिव माय अकाउंट डिटेल्स एंड वंस दैट इज ऑथराइज्ड, you are logged in into Microsoft Azure portal. You can close this into and 1 मिनट में हम वापस उधर जाएंगे. कॉन्फ़िग को सेट करने के लिए ऐसे करो, अकाउंट क्लियर करने के लिए ऐसे करो, अकाउंट लॉगिन करने के लिए मेरे को पता है, ठीक है. सो क्विकली यहाँ पे देखो. सो एज सुन एज अ फायर AZ लॉगिन कमांड ऑन माय कमांड प्रॉम्प्ट, वेब ब्राउजर हैज बीन ओपन वगैरह 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 आया, क्लाउड नेम वगैरह वगैरह आया, यूजर, ठीक है. आई एम लॉग्ड इन नाउ, ठीक है. नाउ आई कैन गेट AZ स्पेस VM स्पेस लिस्ट. पहले अगर मैं करता तो मेरे को नहीं आता. I could fire the commands now. I can get the subscription now. So of course with the speed of internet, हाँ तो देखो अभी यहाँ पे empty है. Now by this command prompt, that CLI Azure CLI is connected to my account जो कि यहाँ पे है. तो यहाँ पे जो भी फायर होगा वो सब सेम टू सेम एग्जैक्टली मेरे को वहाँ पे मिलेगा, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस 30 minutes we have covered. Everybody clear with these particular two things like Azure CLI, Azure PowerShell. These are two things that you need to know from the cloud. Then I have installed Azure CLI, not Azure PowerShell. तो Azure CLI है तो Azure CLI के कमांड्स ही मैं यूज करूंगा एंड दैट इज इनफ फॉर मी टू गेट माय वर्क डन. दोनों में सेम टास्क कर सकते हैं, बट सिंटैक्स कमांड का डिफरेंस है, दैट्स द ओनली थिंग. Give me yes into the chat box if you are clear till this so that I can start creating the virtual machine, which is the task of second half. Can you please send this link? Which link? डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं वो ऐड करता हूँ हर बार. ये CLI वाला लिंक है ना, आई यूजुअली ऐड इट इन द नोट्स. CLI commands to get Azure reason. More CLI commands for reference. अरे छोटा सा था, ऊपर भी लिंक तो भी चलता. ठीक है, आई एडेड. सब्सक्रिप्शन लिस्ट का कुछ तो गलत हो गया, वो देखते एक बार. सो यस गॉट इट, परफेक्ट. ठीक है. सो दिस फाइल इज शेयर्ड ऑलरेडी, सो विमल यू कैन go and refer to that file. And yes, so I'm moving forward to creating the virtual machine. Yesterday also we were wanted to and then we couldn't because there were some basic fundamental things needs to be clear, so before actually starting the practical. Okay, so today is the day to create a virtual machine. I'm going to this particular service, I'm closing this, I don't want it, I'm going to show it from the UI. Currently there is no virtual machine created. I already mentioned the steps yesterday. Here is a button, you can Azure virtual machine, कुछ भी करो इधर जाके बाबा Azure virtual machine create करना, ठीक है. So here I go, I'm inside the virtual machines and basics में I'm gonna put the details like free trial, yes, resource group. Now I have two resource group actually. I'll be choosing Cloud Shell Storage India, which was the first one.
Network watcher RG is recently created. Now what is resource group? Like this, see, any service that you use from the cloud is a resource. Now in which group you want to put that resource is something that asking. So I have two resource groups. I'll be choosing cloud shell वाला जो हमने बनाया था पहले, उसमें ही डाल देंगे. And then virtual machine का name like AZ or Azure trading. I'm putting it from my perspective. You can put your name, खुद का नाम डाल दिया तो भी चलेगा. Asia specific availability zone ठीक है, so I'm not gonna make any changes. Zone 1 is fine for me. Then trusted launch virtual machine. देखो स्टैंडर्ड है ट्रस्ट द बेसिक लेवल ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट पर्सिस्टेंट. ठीक है, ये ट्रस्टेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, इसको पैसे नहीं जाएंगे. सो हियर इज अ चॉइस दैट यू नीड टू मेक. ठीक है. इमेज आई वांटेड टू पुट एज आई मेंशनड यस्टरडे, आई एम गोना पुट विंडोज का 10 वाला वर्जन. फ्री सर्विसेज एलिजिबल है, ये देख के लेना. 10 डाल सकते हो, 11 डाल सकते हो, आपका चॉइस है. मेरे को 10 डालना है बिकॉज 11 आई एम नॉट श्योर. सो दिस इज विंडोज 10 आई चोज. प्रोसेसर सेम रखेंगे. रन विद अजूर स्पॉट डिस्काउंट, आई डोंट वांट टू डू दैट. अभी यहाँ पे सो साइज आई चोज. किसका साइज है ये? ठीक है, ये स्टोरेज है, राइट. सो आई वांट टू चूज अ स्टोरेज एज B1 बेसिक वन. फ्री सर्विस एलिजिबल है इसको, इसीलिए. यूजर नेम हम लोग डालेंगे. आई बी पुटिंग द यूजर नेम ऑफ माइन शे. यूजर नेम मैच. पासवर्ड मैच करना है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है यार. ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. 12 कैरेक्टर चाहिए उनको. ठीक है, अभी मैं भूल गया. रुको. हाँ, आई टाइप्ड. हाँ, मैच हो गया. सो यू अंटिल अनलेस वो जो रेड कलर का आइकन था वो नहीं जाता, यू हैव टू पुट इट अगेन, ट्राई एंड मोर कॉम्बिनेशन. सो दे मेंशनड ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस की इट शुड बी 12 कैरेक्टर्स, अ नंबर एंड ए स्पेशल कैरेक्टर एंड वन कैपिटल अल्फाबेट. माय पासवर्ड लाइफ में कभी मैच नहीं होगा क्या? कल. एक सेकेंड को. अरे ये थोड़ी देर पहले भी हुआ था. रुको, आई एम पुटिंग इट अगेन. अभी मैच हो गया. पहले कुछ तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल दिया था. सो मैं पासवर्ड मैच ना. ठीक है. इनबाउंड रूल्स आई जस्ट अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स में नन नहीं करूंगा. आई वांट अलाउ टू एक्सेस माय वीएम with RDP. So there are multiple protocols that I can choose. I can access the VM with HTTP, HTTPS. So I'll need it later once I deploy my application. HTTPS से मुझे access चाहिए. If it is Linux OS, I would choose SSH. But now since I chose Windows operating system, I'll choose RDP. RDP is something which will help me to connect to the remote machine. ठीक है. Licensing, I confirm I have an eligible Windows license with multiple hosts, right? विंडोज 10 एंड 11 लिया है ना, इसीलिए दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. चेक करो यार, कहीं फर्क पड़ता है, वो लोग क्रिएट कर देंगे लाइसेंस अपने लिए. लाइसेंस विद मल्टी टेन. ठीक है. नेक्स्ट आई एम गोइंग इन डिस्क पार्ट. डिस्क हियर इन द डिस्क आई कैन चूज 127 GB वाला मत चूज करो, छोटा चूज करो कुछ भी. इससे छोटा नहीं चाहिए. ठीक है, इतना ही है. डिफॉल्ट इमेज विद दैट पर्टिकुलर ओएस, डिफॉल्ट इमेज कम्स इज 127. कीप इट दैट वे. लोकली रिडंडेंट प्रीमियम एसएसडी में चूज कर रहा हूँ. किधर है प्रीमियम? हाँ. सो दैट इज द बेस्ट फॉर प्रोडक्शन एंड वर्कलोड. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. यू कैन चूज स्टैंडर्ड एज वेल. एसएसडी है ना, दैट इज फाइन. which is platform managed key for accessing and everything is fine. ठीक है. I chose my hard disk. If you don't want this, you can add additional hard disks if you want storage space. This is for operating system. Okay, 127. If you want additional, you can create and attach a new disk. Like extra disk space अगर आपको चाहिए, you can attach. I don't want it right now. I just want my VM to be up. Nothing else into this. Advanced section में जाओ मत. So you don't need to worry about that advanced section as of now, since you are beginning up. I'm going in network. So see, AZ training VNet. So this VNet is created for me by default. So पहला वाला VNet था सेंट्रल इंडिया का, फिर अभी ये दूसरा VNet बनाया है. So what this VNet virtual network I was talking about, जो हमने कमांड्स में virtual network लिखा था. This is a virtual network inside a cloud,
इसके अंदर ये VM रहेगा और इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है. सो बाय डिफॉल्ट इट इज अलाउड फॉर आई गेस ऑल नंबर्स 32 के बाद 24 आता है. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डॉट इसका 0 से लेकर 255 तक एनी कॉम्बिनेशन will be able to access this particular VM. If I don't want to do so, suppose I don't want to do so, I can manage the subnet configuration by creating a new subnet, which I don't want to do right now. So what subnet basically, it will restrict the IP address. 24 है तो सिर्फ 250 IP 251 IPs अवेलेबल रहेंगे, उनसे वो एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, प्राइवेटली, ये प्राइवेट है इनका. तो एंड देन पब्लिक आईपी के लिए आई हैव अजूर ट्रेनिंग आईपी व्हिच a new group it will create by default. This is new, you can see it has created for me. ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ मत रखो, बेसिक रखो, अभी करंटली कुछ नहीं करेंगे. इन हाँ, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स, आई एम सिलेक्टिंग आरडीपी और इट इज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड, यू डोंट नीड टू डू एनी चेंजेस. तो ये सब कुछ हुआ. डिलीट पब्लिक आईपी व्हेन वीएम इज डिलीटेड, आई एम टिकिंग इट. अगर वीएम डिलीट कर दिया मैंने कल, तो उसका आईपी और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी, it should get deleted. I just want the same, because after some time, after this demo, I'm going to delete it. And I would recommend all of you, अगर आपको VM नहीं लग रहा है, if you are not deploying, if you are not using that VM, kindly shut it down, number one. Secondly, uh, if you do not want it in future, kindly delete it. ठीक है, shutdown is first level अगर आपको वापस यूज करना है तो. if not, कि अरे ठीक है मैंने देख लिया कि ऐसे ऐसे चलता है, आई जस्ट गॉट द फीलिंग कि मेरे को आज समझ रहा है AWS, सॉरी Azure, go and delete the VM. ठीक है. So load balancer, currently I don't want, I could choose Azure load balancer if I am deploying some application and people are coming to visit my website or web app. Currently there is no need, I'm not doing anything. Management में जा रहा हूँ. So here in management I'm not going to change anything. बेसिक प्लान से उसने ऑलरेडी ये कर दिया है एनेबल. Azure AD नहीं है मेरे पास. ऑटो शटडाउन का आई कैन पुट द टाइमर, ये खत्म हो जाओ शाम को 10 बजे के बाद, 10 PM. ये UTC टाइम है, सो आई विल मेक इट इंडियन. ठीक है, UTC प्लस 5:30 में चेन्नई कोलकाता मुंबई ये वाला मेरा है. ठीक है, UTC प्लस 5:30. सो एवरी नाइट एट 10 PM इट विल ऑटो शट डाउन. ठीक है, जो मैंने कल बोला था, यू कैन ऑटो शट डाउन बिकॉज इन ऑर्डर टू सेव कॉस्ट. आफ्टर 10 PM इन इंडिया नोबडी इज गोइंग टू यूज माई VM. दिस इज माई अजम्पशन. ठीक है, लोग करते यूज करेंगे बट मैं उनको अलाउड यूज नहीं करूंगा, तो इट विल सेव माई कॉस्ट बेसिकली. बैकअप नहीं चाहिए बाबा अभी करंटली, मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाना चाहिए. गोइंग डाउन, ऑर्केस्ट्रेशन नहीं करना है मेरे को, हॉट पैच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, सो दिस इज डन. इन मैनेजमेंट पेज व्हाट आई डिड, आई जस्ट एडेड ऑटो शट डाउन, एनेबल ऑटो शट डाउन, रेस्ट इज एग्जैक्टली सेफ. अगर डिफेंडर का ऑप्शन चेक नहीं है तो उसको चेक करो, मेरे पास ऑलरेडी चेक था. ठीक है, आई एम गोइंग टू द मॉनिटरिंग. यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है. अलर्ट्स में आई कुड क्रिएट अलर्ट्स बट उसके लिए टाइम लगेगा, आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ. डायग्नोस्टिक नहीं करना है, एनेबल ओएस गैस डायग्नोस्टिक कुछ नहीं करना है. ठीक है, आई डो नॉट वांट टू सी, ये रूल्स है कि इफ आई यूज मोर देन दिस देन ईमेल करो मुझे वगैरह वगैरह, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस स्टफ. तो मैं अलर्ट्स नहीं सेट करूंगा अभी. अलर्ट इज लाइक यू आर गोइंग टू गेट द ईमेल एवरी ऑपरेशन. एडवांस में कुछ करने जैसा है नहीं. सपोज आई टेल यू व्हाई इट नीडेड. Before loading your operating virtual machine, if you want to get some software installed pre-configuration, तो उसका कस्टम डेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये सेटिंग्स होना चाहिए, ये फाइल्स उसमें ऐड होना चाहिए. फिर एक्सटेंशन के लिए है सिलेक्ट एप्लीकेशंस टू इंस्टॉल. ठीक है, वीएम एप्लीकेशन, वीएम में क्या क्या चाहिए, तो क्या क्या चाहिए उसके लिए लिस्ट मिलेगा, आप चूज करो. तो वो सारे एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करके देगा. बाय डिफॉल्ट वीएम में सिर्फ कौन आता है, विंडोज के सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, वो सारे आते हैं. शोइंग जीरो एप्लीकेशन. मेरे को सपोज क्रोम चाहिए, इस जीरो इसमें नहीं दिखा रहा है क्या. ठीक है, सो इट इज नॉट शोइंग मी फॉर विंडोज 10 और करंटली माई फ्री सब्सक्रिप्शन, तो मैं बाद में जाके इंस्टॉल कर सकता हूँ. ठीक है, सो दैट इज फाइन एब्सोल्युटली एज ऑफ नाउ. आई कैन सिलेक्ट द एप्लीकेशन टू इंस्टॉल वट एवर आई वॉन्टेड टू, एंड देन फिर यूजर डेटा मुझे कुछ नहीं करना है, परफॉर्मेंस में भी कुछ नहीं करना है. होस्ट आई एम कीपिंग सेम, कैपेसिटी रिजर्वेशन, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग इन माई एडवांस सेक्शन because only one thing I know from this section is if you want to install something pre already VM शुरू होने से पहले वो कर सकते हैं. Secondly, if you want to post some configuration related file, I can put it from here. I don't want to do both of them, so मैं directly नहीं चाह रहा.
टैग इज लाइक जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर मेरे पास बहुत सारे वीएम है तो कौन सा वीएम क्या काम करता है उसके लिए होता है। तो वीएम टाइप करके मैं एक टैग बना सकता हूँ और उसमें वीएम टाइप, टी फॉर टाइप, आई एम गोना पुट वैल्यू एज ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का है मेरा इसलिए, ठीक है। सो दिस इज अ वीएम टैग सो दैट आई सपोज नेक्स्ट टाइम इफ आई क्रिएट मल्टीपल वीएम्स आई अंडरस्टैंड, अरे ये ट्रेनिंग वाला है तो इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट स्टेप, रिव्यू एंड क्रिएट। हियर आई गो। सो I'll get all the details in by default। देखो मेरे को before creating this VM it is telling me मेरे को 0.8 like 8 पैसा is per hour I'm gonna get charged। तो मेरे पास कितना क्रेडिट्स है? 15,000 का। किधर गया वो? ये, हाँ 15,000। देखो कम हो गया ना थोड़ा सा, कुछ ट्राई किया मैंने इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 0.8 रुपीज इट विल चार्ज मी पर आवर। तो इतना क्रेडिट है तो 0.8 तो चल, मैं कितने साल, महीना भर चला सकता हूँ, ठीक है। दैट इज फाइन। वाई इट इज चार्जिंग? इट इज नॉट चार्जिंग मी फॉर वीएम, इट इज चार्जिंग मी फॉर स्टोरेज। दैट स्टैंडर्ड स्टोरेज जो मैं चूज किया at the time of creation of VM. So for that storage, it is charging me, not for the VM, not for the image. Okay, virtual machine is free for 12 months. Now see how they charged. Like they are not going to charge you for VM, but they are going to charge you for storage space. See how smart they are. That is how they are building business. VM फ्री है बट उसके अंदर स्टोरेज तो लगेगा। विदाउट स्टोरेज यू कैनॉट क्रिएट वीएम, तो स्टोरेज का पैसा ले रहे, ठीक है। ठीक है, दैट्स फाइन। सो योर सेट आरडीपी पोर्ट्स ओपन टू इंटरनेट, मतलब एनीबडी कैन यूज, तो वार्निंग दे रहा है बेसिकली। सो इट यू शुड नॉट डू इट फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। इट इज शोइंग मी ऑल द डिटेल्स लाइक फ्री ट्रायल, ये होगा ये होगा ये होगा, इतना है, ये 10 विंडोज 10 डाला है, स्टोरेज ये है, अक्षय डाला है, आरडीपी से कनेक्ट कर सकते हो, विंडोज क्लाइंट वगैरह वगैरह। इमेज डिफॉल्ट प्रीमियम एसएसडी लोड किया है, नेटवर्क का ये है सेटिंग्स, एवरीथिंग वॉट एवर वी डिड टिल नाउ it is showing me the details। so I'm done filling it, I'm okay। validation यहाँ पे पास होना चाहिए, तभी आपका ये बटन enable होगा create का। and since I'm doing right steps, I'll be able to create the VM। clicking on the create, it will take at least 5 minutes। deployment initialize हो गया, submit हो गया, deployment in progress। so this is create VM Windows desktop Windows 10 और यहाँ पे deployment in progress चल रहा है, ठीक है। so it will take at least next 2 to 3 minutes। so we'll till now we'll wait। ये होने दो इसका वीएम क्रिएट। तो अभी अपन वापस जाते हैं। देखो ये क्या क्या किया उसने, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, आईपी एड्रेस बनाया, और ये क्या बनाया, नेटवर्क इंटरफेस बनाया, यहाँ पे दिखेगा। तो भाई साहब इसने इतना बनाया, नेटवर्क इंटरफेस बनाया। अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया है शायद, अभी क्या कर रहा है अंदर नहीं पता। हाँ यहाँ पे मुझे स्टेटस क्रिएटेड दिख रहा है। सो इट हैज क्रिएटेड वर्चुअल मशीन फॉर मी। let's see what how much time it will take। so meanwhile I'm coming back to my list। तो देखो यहाँ पे Azure VM list मैंने किया था। so that time मेरे को empty मिला था, अभी मेरा VM create हो गया ना वहाँ पे। I'm firing this command again। देखो that is the use of this particular CLI tools। तो see it has listed all the details। बहुत खतरनाक जेसन प्रिंट किया। देखो VM list के बाद उसने बताया मेरे को क्या क्या है मेरे पास। दिस इज VM स्टोरेज स्पेस सेंट्रल इंडिया में है। आई डोंट नो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। रिसोर्स ग्रुप ये है, देन एडमिन यूजर इज अक्षय, देन क्या क्या मिल सकता है उसमें, क्लाउड शेल स्टोरेज है सेंट्रल इंडिया का, उसमें रिसोर्स ग्रुप है। देन ठीक है। सो इतना डिटेल में मेरे को करना नहीं है। प्रीवियस स्टोरेज यूज किया मैंने, स्टोरेज टाइप और वीएम टाइप इज ट्रेनिंग, ये टैग टैग में है, खत्म, ठीक है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट इट इज शोकेसिंग मी, ठीक है। सेम टू सेम चीज आई कैन एक्सेस इट फ्रॉम कमांड लाइन। ये हो रहा है क्रिएट, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको पैरेलली। so I'm going in my command prompt and I'm going to show you a difference, what is difference between bash and Azure CLI, ठीक है। so let's look at the things। क्या था सिंटैक्स, एजी स्पेस वही दिखेगा यहाँ पे बैश में जो हमने यहाँ पे देखा था, फिर भी वापस दिखा रहा हूँ, एजी स्पेस वीएम लिस्ट, कितने मेरे पास वीएम है उसका लिस्ट बनाओ, ठीक है। so it is showing the same thing, इतना बड़ा जेसन। so which is very hard to interpret, मेरे को इतना सारा डिटेल्स नहीं चाहिए था। so what I could do, I could go to PowerShell quickly, switch to PowerShell, yes। ये पूछना नहीं चाहिए उसने मेरे को,
ठीक है, I'm going to fire a command. What was the command? Can anybody help me in the chat box? If I am using PowerShell, what command I should fire? Quick, I want it from you guys. I'm going to type the command only if anybody helps me in the chat box. If anybody recalls, like PowerShell के लिए कौन सा command बोला था मैंने? Yes, come on quick. ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस चल रहा है, इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं. यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे. Nobody recalls. अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. इफ देयर आई एम नॉट श्योर, लाइक एजी 900 के लिए सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, बट एज यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द हाई वैल्यू सर्टिफिकेट्स, दे विल गिव यू प्रैक्टिकल लैब्स टू परफॉर्म. तो आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, फिर आपका एग्जाम क्लियर होगा. ठीक है, दिस टाइम आई एम हेल्पिंग. आई वांट यू गाइस टू रीड द नोट्स एंड देन कम बैक. देखो वीएम डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट हो गया, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल वगैरह 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 वगैरह. मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ. व्हाट वाज द कमांड? गेट हाइफन एजी सब्सक्रिप्शन, जैसे एजी हाइफन वीएम. देयर इज नो स्पेस. there is no space, so you can use az get az vm. That's it. I'm hitting enter. तो देखो यहाँ पे get az vm करने के बाद देखो इसने अच्छे से टेबुलर फॉर्मेट में मुझे डेटा दिया. क्या है? रिसोर्स ग्रुप नेम ये इंडिया क्लाउड शेल वाला, वीएम का नेम अजर ट्रेनिंग, लोकेशन सेंट्रल इंडिया, वीएम साइज स्टैंडर्ड bs1, ओएस टाइप विंडोज, एंड एनआईसी लाइक अजर ट्रेनिंग, ये एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस बनाया. प्रोविजनिंग स्टेटस सक्सीडेड, जोन 1. एक ही जोन में हमने इसको क्रिएट किया, मल्टीपल जोन में भी क्रिएट कर सकते थे. सो दिस इज मोर बेटर व्यू दैन दी बैश. यस और नो? ये टैबुलर फॉर्मेट में मुझे इजीली, अगर बहुत सारे वीएम से, तो मुझे यहाँ पे इजीली दिख सकता है. ठीक है, अगेन देयर आर पैरामीटर्स और क्या क्या चाहिए वो, ये दीज आर डिफॉल्ट कॉलम्स दैट दे हैव एडेड. इफ यू वांट मोर डिटेल्स, इट कैन आल्सो प्रोवाइड. Yes, Supriya, you're noting it down. Good. Chalo, let's move forward. VM is created. Now it's time to go and go to home again. This is, we are inside the VM, so I don't want to get it inside the VM. I'm going in my virtual machines again. So previously it was empty. So now it will show me Azure training वाला VM subscription. ये बाकी details वापस यहाँ पे दिखेंगे मुझे. ठीक है? I'm just clicking in my Azure VM which is there. So it will open up my dialog box like this. ये extra की open हो गया. हाँ, इसको अपन निकल सकते हैं. हाँ. So this is my VM. You have multiple options, but what I want is agent is not ready. Troubleshoot the issue. Training virtual machine. क्यों रे? क्या दिक्कत हो गया? Diagnose and solve problem. Machine agent status not ready. तो VM अभी तक okay. Status तो मुझे यहाँ पे रनिंग दिख रहा है. ठीक है? So I don't need to worry. Now here I can see there is public IP address. This is what I am able to see. I'm going to delete the VM once I'm done with the training because ये on रहेगा इसलिए. ठीक है, I'm going to showcase you, right? Private IP is this. This is the public IP address through which anybody outside the world can access this VM. ठीक है, मेरे VM का पासवर्ड मेरे को ही पता है, तो मेरे अलावा कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा बेसिकली. बट स्टिल चलो, इफ यू वांट टू कनेक्ट to the VM and if you want to start, you can restart, stop, you can capture the snapshot, open in mobile, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. क्लाउड और PS से भी उसके साथ काम कर सकते हैं. I want to connect to my VM. I'm going into the connect option. So here it is showing me the IP address. बाबा ये IP address डालो, यूजर एंड पासवर्ड डालो, you can connect. ठीक है, तो देर इज ऑप्शन लाइक आपको खुद से नहीं करना है, तो यू कैन यूजर नेम पासवर्ड का पॉपअप तो आ जाएगा. यू कैन नेटिव आरडी पे है, ये यहाँ पे सिलेक्ट करके. सो दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सेसिंग. देर आर मोर वेज टू कनेक्ट, 3 मोर, बट इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यार. सो आप ये आरडीपी को सिलेक्ट करना, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यू कैन गो एंड डाउनलोड आरडीपी क्लाइंट. ठीक है, वैलिडेटिंग प्री रिक्विजिट सब कुछ है, पब्लिक आईपी है, ओपन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये पहले करना है. और चेंज लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम की, हाँ, डाउनलोड एंड ओपन आरडीबी फाइल, खत्म. तो ये सारे स्टेप्स पास हो गए, मतलब ये आरडीपी हमें करने देगा. ठीक है, डाउनलोड कर रहा हूँ मैं आरडीपी का फाइल, डाउनलोड एंड ओपन आरडीपी. तो ये मैंने आरडीपी फाइल डाउनलोड कर दिया, रिमोट डेस्कटॉप वाला फाइल वही ओपन करेगा जो विंडोज आर MSTSC करने के बाद ओपन करता है. डोंट टास्क ऑन दिस कंप्यूटर, पब्लिशर, ये इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू माई VM. देखो क्रेडेंशियल पूछ रहा है, यूजर नेम इज अक्षय and I'm going to type my very big वाला पासवर्ड. कर दिया, ओके कर रहा हूँ. रॉन्ग हो गया क्या?
यार ये मेरे साथ हमेशा होता है। हाँ, आई टाइप रॉन्ग कोड। अभी करेक्ट है, हाँ, सो इट इज करेक्ट, हेंस इट हैज शोकेस मी द सेकंड पेज. Don't ask me on this computer. I'm trying to log in to my VM and see. I can see a black page. अगर आपको दिख रहा होगा मेरे साथ, तो ये मेरा VM है, मैं इसमें घुस रहा हूँ अभी. विंडोज 10 का VM वर्चुअल मशीन. सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट, मतलब ये RDP का कनेक्शन है इस टाइम, एंड आई एम एबल टू यूज माई लैपटॉप एज वेल. ठीक है, ये पैरेलल बैकग्राउंड में लैपटॉप है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है. एंड I hope you are able to see what I'm able to see right now. And I'm trying to enter into the virtual machine, which is what my virtual machine. So एक another system जो क्लाउड में है, कहाँ पे है? अजूर के क्लाउड में, कहीं पे इंडिया रीजन में उन्होंने मेरे लिए एक स्पेस बनाया है. वहाँ पे उन्होंने दे क्रिएटेड रैम, CPU वगैरह वगैरह वगैरह, एंड देन दे आर अलाउिंग मी टू एक्सेस द VM. ठीक है, लेट्स सी कि क्या दिखाता है ये थोड़ी देर में. वेट करो यार, ये नया VM नहीं क्या, वेन एवर यू बाय अ न्यू लैपटॉप एंड इट रीस्टार्ट्स, so the first initiation is taking some time. So we'll wait for 2 minutes until it gets started, and then we'll talk about that. The next thing. Yeah, is it interesting? Would you like to try it by yourself? Yes or no? या तो ये प्राइवेसी नोटिस नहीं कि नया सिस्टम है ना, तो ये सब कुछ पूछेगा, मेरे को स्किप करने का ऑप्शन है क्या? नहीं है. ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा. फर्स्ट टाइम ये आपके सामने फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ VM. तो it is like a new system you bought from the market. You buy a new laptop and then first time setting. तो ये चला शुरू हो गया. So this is what my laptop, sorry, virtual machine looks like. Simple. ठीक है, exactly same as your own system. राइट क्लिक भी होता है स्क्रीन पे. हो जा. हाँ, ये राइट क्लिक हो रहा है. सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम. वहाँ पे 4:26 AM हुआ है आज की डेट में, बिकॉज इट इज होस्टेड समवेयर. किधर होस्ट हुआ है वो पता चल जाएगा इधर जाके, टाइम जोन वगैरह क्या है. मैं तो ओके ओके, टाइम सेट करते टाइम मैंने इंडिया का किया था शटडाउन के लिए, बट VM का टाइम शायद US बेस्ड है अभी भी. ठीक है, लेट इट बी, हमें क्या ही करना है. ठीक है, तो मेरे पास देखो सेम टू सेम विंडोज 10 का जैसे होता है, मैं विंडोज ई कर रहा हूँ, एक्सप्लोरर ओपन कर रहा हूँ. तो जो भी आपको आपके सिस्टम में दिखता है सेम टू सेम यहाँ पे मुझे दिख रहा है. आई कैन कॉपी माई एप्लीकेशन. जो भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है, जार फाइल जावा का, अगर जिप है तो वो फाइल्स में यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, डिप्लॉय कर सकता हूँ, और फिर उसको एक्सेस भी कर सकते हैं. इफ यू वांट टू यू कैन यूज इट लाइक योर पर्सनल कंप्यूटर. बट अभी ये बहुत स्लो है जो मैंने चूज किया है, बिकॉज वो 1 GB का स्टोरेज था ना कुछ. तो डू यू वांट टू अलाउ दिस PC टू डिस्कवर एंड वर्क? यस, आई वुड लाइक टू. इंटरनेट होना चाहिए यार इसमें. हाँ, तो ये थर्सडे अक्टूबर किधर का दिखा रहा है, टाइम जोन पता चल जाएगा तो. ठीक, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. ठीक है, सो दिस इज माई PC. आई एम जस्ट गोइंग देयर. तो यहाँ पे C ड्राइव दिखाएगा. टेम्पररी स्टोरेज भी दिया है 3 GB का, फोकट में दिया है, मेरे को क्या पता. अपने 126 चूज किया था. ठीक है, याद है आपको शुरू में. तो इसमें कुछ भी नहीं इंस्टॉल किया उन्होंने, एम्प्टी दिया है, OS इंस्टॉल करके पूरा खाली. ठीक है, कुछ भी नहीं है यूजर में, सिर्फ मेरा नाम दिखेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, ये पब्लिक है. सो इट इज लाइक ए न्यू सिस्टम दैट आई ऑनबोर्डेड. तो आई कैन यूज एज, बहुत ही बकवास सॉफ्टवेयर, करना पड़ेगा अभी. आई प्रेफर गूगल क्रोम, बट अभी नहीं है तो एज को यूज कर लेंगे. ठीक है, सर्च करना है, हम यहाँ पे जाके टेक एम्पलीफायर सर्च करेंगे. टेक एम्पलीफायर. ठीक है, किधर जाके, ये VM में जाके. ठीक है, so let it open and then we'll try to see if I am able to connect to the internet. So there are 4-5 things that I wanted to do over here once I open the VM. So I created VM using Azure portal. I connected to the VM using remote desktop. Now I'm going to install software and change the network configuration on Azure using Azure portal. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते थे जो मैंने दिखाया, बट उसमें दिखा नहीं मुझे सॉफ्टवेयर, तो दैट इज व्हेन आई वाज नॉट एबल टू इंस्टॉल. बट नाउ यहाँ से हमें ऑप्शंस है ऐसे. सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का तो नहीं है, बट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का है ऑप्शन यहाँ पे. सॉफ्टवेयर का भी होगा, मेरे को पता नहीं है. ठीक है, कनेक्ट, ट्रबल शूट, सपोर्ट, रीडिप्लॉय, रीअप्लाई, परफॉर्मेंस डायग्नोस्टिक्स, वेबहुक्स नहीं करना है मेरे को. ऑटो मैनेज, चेंज ट्रैकिंग, अपडेट्स, बैकअप नहीं है. और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मेरे को नहीं दिख रहा है. बट आई कैन डेफिनेटली गोना चेंज नेटवर्किंग, विच अगर मेरे को चाहिए तो मैं पब्लिकली एक्सेस कर सकता हूँ. देखो, डिनाई किया है, डिनाई ऑल बाउंड, ये रूल हमेशा रहेगा नेटवर्क में. ऑल इनबाउंड को बाय डिफॉल्ट डिनाई किया है. ये अजोर ट्रेनिंग एनर्जी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप.
तो इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ करंटली क्या किया है, इस पोर्ट को RDP को अलाउ किया, बट वो सारे पोर्ट पे अलाउ किया शायद, इसलिए यहाँ पे वार्निंग आ रहा है। तो आई कैन मॉडिफाई इट टू अलाउ इट टू माई ओन, या सिर्फ मेरे लैपटॉप को। ठीक है, ये एक बार हम लोग VM में घुसते वापस। ये मेरा VM है, क्रोम। अरे यार, वर्चुअल मशीन में ये ओपन ही नहीं होगा। हाँ, हो गया शायद। वेलकम टू क्रोम बोल रहा है बाबा, स्टार्ट विदाउट योर डेटा। भाई साहब, हमें इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं मेरा डेटा डाल दूँ यहाँ पे। अरे यार रुको ना यार, चलो ना यार, शुरू करो ना यार। ये माइक्रोसॉफ्ट वाले बहुत टाइम लेते हैं। यस, सो आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर VM। हमें सिर्फ चेक करना है यार, इधर इंटरनेट है क्या, बस दैट्स इट। वेलकम टू क्रोम वगैरह वगैरह की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं थीम में सेट नहीं करने वाला अभी। तो यहाँ पे मेरे को सर्च करना है टेक एम्पलीफायर्स। अगर इंटरनेट होगा तो आई विल बी एबल टू इंस्टॉल एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आई वांटेड। ठीक है, टेक एम्पलीफायर्स का इसमें स्पेस हो गया गलती से। ठीक है, आई एम जस्ट सर्च टेक एम्पलीफायर्स, तो सारे एम्पलीफायर्स के पिक्चर आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। बिकॉज ये करंटली दिस सर्च इज हैपनिंग इन, किधर, दिस सर्च इज हैपनिंग इन US वाला नेटवर्क शायद। तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है मेरा पिक्चर। तो ओल्ड क्लास का प्राइवेट लिमिटेड किधर से आया, इन्फोबिल ने डाला है ये यहाँ पे। इन्फोबिल का है, गूगल का नहीं है। हाँ, टेक एम्पलीफायर्स प्राइवेट लिमिटेड, शायद उनके यहाँ पे इन्फोबिल होता है। क्या बता यार, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये वाला चीज़। ठीक है, सो इट इज शोकेसिंग रेस्टोरेंट इधर से है। ठीक है, आपने क्या ही करना है, किसका लोकेशन डाला क्या पता, लेट इट बी, अपने कुछ करना नहीं है। सो बेसिकली टेक एम्पलीफायर्स का वेबसाइट है यहाँ पे। देन बेस्ट पाइथन कोर्सेस, लिंक्डइन है यहाँ पे। then there are multiple things. ठीक है, now since I have internet, I can go and install Chrome, I can install Postgres software, I can install a lot of things, and I can deploy my application into this particular system. ठीक है, so this is like my another machine, it is hosted on cloud, it is always available. If I put some index.html over here and उसका मैंने access अगर दिया तो I'll be able to access, but deploy करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। So I can access this basically using this particular port IP address, and then port मुझे enable करने पड़ेगा HTTPS or HTTP, and with that port I'll be able to access my application from a remote location. So this is what the whole task all about. How to deploy over here, we'll see it in sometimes later, like app services and all other services we'll see. That time I'll show you how to deploy. We are going, as I mentioned, we are going to deploy two applications. एक तो Python वाला application and दूसरा Java वाला application. And we'll try and test it with the help of REST Postman, the REST APIs that we are going to create. ठीक है, UI based application देखते हैं एक बार, अगर टाइम मिला तो I can deploy the Angular or Azure as well, sorry Angular or React as well. ठीक है, so that we can access it from the browser directly. खत्म। चलो, this is it for today. So see you tomorrow. I'm just closing this VM. I don't have anything to do in this VM. I'm just closing, and right now I'm just shutting it down. I'm not deleting the VM because I might need it sometimes later. तो मैं सिर्फ इसको क्या कर रहा हूँ, शट डाउन कर रहा हूँ। अगर मैं शट डाउन करता हूँ तो स्टोरेज का स्पेस मेरे को फिर भी लगेगा, जो वॉट एवर। See, deleting is like removing the storage, but I'm keeping it in shutdown mode. It means that particular VM will have the storage. देखो अभी ये रनिंग है, मैं इसको शट डाउन करने की कोशिश करूंगा। क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इधर तो शट डाउन का देखो, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, खत्म। डू यू वांट टू स्टॉप ऑल द सर्विसेज, सिलेक्टेड सर्विस, यस आई वांट टू स्टॉप। तो एग्जीक्यूशन स्टॉप एग्जाम कमांड वगैरह वगैरह हो रहा है, सो दैट नोबडी कैन एक्सेस अपार्ट फ्रॉम मी। फर्स्ट, सेकंड, क्या सेकंड, वीएम का कॉस्ट जो भी बैकग्राउंड में लगेगा वो नहीं लगेगा, बट स्टोरेज विल बी अटैच टू दिस पर्टिकुलर वीएम। इट इज गोना चार्ज मी, क्या था अमाउंट, 0.01 रुपीज और 8 पैसा, राइट, 0.8 रुपीज पर आवर। तो बेसिकली इफ इट रिमेन्स ऑन, ठीक है, अभी ये स्टॉप किया मैंने तो मेरे को इतना चार्ज लगेगा। कल हम लोग चेक करेंगे हमारे नोटिफिकेशन से, इधर इधर है 799 था ना, तो कल कितना होगा विल चेक। ठीक है, एंड इसका पूरा स्टेटस अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है शायद, इट इज इन रनिंग स्टेट। लेट मी जस्ट रिफ्रेश, रिफ्रेश का ऑप्शन किधर है, इधर।
तो इट इज स्टिल शोइंग एग्जीक्यूशन स्टॉप कमांड सिलेक्टेड है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा, अभी ये स्टॉप हो जाएगा शायद से, रिफ्रेश करो। हाँ, डीएलोकेटिंग। हाँ, तो अभी ये डीएलोकेटिंग है, डीएलोकेटेड आना चाहिए प्रोसेस में वो। हाँ, स्टॉप्ड आया, डीएलोकेटेड। ठीक है, तो माय वर्चुअल मशीन स्टॉप्ड, चार्ज लगे नहीं लगे देख लेते हैं। ठीक है, so basically as soon as since I'm using it, I'll be getting charged and I'll be able to see the charges in my किधर गया, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग वाला पेज। तो ये जो डैशबोर्ड हमने बनाया था इतना, सॉरी उन्होंने हमारे लिए बनाया है, तो यहाँ पे वही देखना है कि बाबा कितना पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, so you can come over here and you can check like what is the billing if you are doing it along with me। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस करके है, so you can go and check how much which service is taking how much charges। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे उसने ओरी में तो दिख जाना चाहिए था। नहीं वो, अरे यार क्या यार तुम, सेटअप योर अकाउंट कॉन्फ़िगर सब्सक्रिप्शन एनालाइज कॉस्ट टू रिकमेंडेशन। ठीक है, आई विल डू इट लेटर, अभी नहीं करेंगे उसको। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टू थिंग्स टुडे वी कवर्ड। एक तो सीएलआई वाला, उसके थ्रू कैसे काम कर सकते हैं, Azure CLI and Azure PowerShell, both are important tools depending on the use case you need to use either of them। कौन सी कंपनी में जाओगे वो लोग क्या यूज कर रहे होंगे आपको नहीं पता, तो दोनों सीख लो, कमांड सेम ही है, सिर्फ सिंटेक्स अलग है। Secondly, we learn how to create virtual machines in cloud। Okay, so this is it for today। Thank you so much for joining in। See you tomorrow at the same time 9 o'clock and we'll learn few more services tomorrow। ठीक है, इसका बेनिफिट, इसको यूज करके वर्चुअल मशीन्स को व्हाट आल हाउ वी कैन गेट एक्सेस ऑफ द फाइल्स पब्लिकली, एंड फिर स्टोरेज करना है कुछ तो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट रहेगा फर्स्ट 30 minutes एंड नेक्स्ट 30 minutes देयर विल बी सम प्रैक्टिकल। दैट इज हाउ आई एम प्लानिंग सो दैट यू गाइज विल रिटेन। Oh, sorry. Tomorrow is Wednesday, Friday, so there won't be a session for tomorrow. Sorry for the misinterpretation. So Friday, I do have some urgent work to do in the morning session, and which is planned a few months back. So I cannot, change it. So our sessions will be Monday to Thursday only. ठीक है? So we'll meet directly on next Monday. So till then, keep practicing these things. तो मेरे को delete करना चाहिए था VM actually, कई को shut down किया। 3 दिन 4 दिन नहीं रख सकता हूँ because weekend पे मुझे कुछ काम नहीं है। ठीक है, if I do I'll see it। Okay, thank you so much for joining us। See you tomorrow, see you on Monday। Bye।